the last lecture, in the previous lecture, that was lecture number 13, we have studied the new type of a tree, and that is called a threaded binary tree. And right after its implementation and understanding and its implementation in C++, then we have seen some properties of the complete binary tree. So in today's lecture, we will be discussing the new data structure that is called the heap data structure, or the heap ADT. However, before proceeding further, let's have a talk, and that talk is related to your mid-semester exam. So please respond to me that you people can easily hearing me, and you can seeing or watching the lecture slides as well. Yes, sir. We can Yes. see you. Okay, so there is a news about your mid-semester exam, and that news is that you will be having your mid-semester exam conducted at various virtual university centers located at various cities. And I hope you people have already chosen those centers according to your location, according to your home location. So you have to conduct your mid-semester exam over there. Do you know? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो be prepared for that. और आपके जो फर्स्ट 8 लेक्चर्स हैं, ठीक है, उनमें जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, उनमें से आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा. दैट इज योर कोर्स. The topics we have covered in our first 8 lectures, that is the course for mid semester exam. ठीक है जी, CRs भी सुन लें ताकि जो स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन नहीं हैं उन्हें भी ये बता सकें. ठीक है. So any query or questions from your side? So whether it be जी, please one by one. जी, ये इसी वीक में अनाउंस हो जाएगा. इसी वीक में आपको डेट शीट मिल जाएगी. ठीक है, डेट शीट अनाउंस होगी और उसमें प्रॉपरली आपको बताया जाएगा कि किस दिन आपका कौन सा पेपर है और उसकी टाइमिंग क्या है. ठीक है. और वो वर्चुअल सेंटर्स जो हैं वीयू यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो सेंटर्स हैं लोकेटेड एट वेरियस सिटीज, वहां पे आपके होंगे. ठीक है. जो भी सेंटर आपने चूज किया है वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम आएगा. वहीं पे आपने जाके वो टेस्ट या पेपर जो है देना होगा. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? Okay, so let's move forward for today's lecture. And जी, कितनी स्लाइड्स हमने कवर की थी लास्ट टाइम इस लेक्चर की? ये डमी वगैरह हमने कर लिया था. कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी. सर आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई है. स्क्रीन हैज बीन सर स्टक्ड. दूसरा ये कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटीज के अंदर होंगे तो इधर वेदर इट बी रिटन बेस और एमसीक्यूज बेस और ऑनलाइन बेस. देखें, एमसीक्यूज तो नहीं है क्योंकि हमें कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी गई कि एमसीक्यूज बेस्ड होंगे. अभी तक हमें सिर्फ ये कहा गया है कि आप मिड सेमेस्टर एग्जाम प्रिपेयर कर लें. वो उसमें जो आपका एग्जाम होगा इस सब्जेक्ट के हवाले से मैं आपको यही कह सकता हूं कि आप प्रिपेयर रहें. अगर एमसीक्यूज आते हैं तो आप ऑलरेडी आपको पता है आपके जो क्विजेज हुए हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड हुए हैं. ठीक है. तो अगर नॉर्मल पेपर हुआ तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. डेफिनेशंस होंगी,
शॉर्ट कोड्स होंगे, जैसे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस होंगे, उनका कोड लिखना होगा, ठीक है, और डेफिनेशंस होंगी, या किसी एक आध टेक्निक को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, एल्गोरिदम लिखने को कहा जा सकता है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके। सर विंटर वेकेशन हो रही हैं? जी, विंटर वेकेशंस होंगी, 24 से आपकी विंटर वेकेशंस हैं, ठीक है। जी, अब मुझे बताएं कि आप लेक्चर स्लाइड्स को देख सकते हैं और ये स्ट्रक तो नहीं है? Yes, sir, we can see. Okay, so let's start our today's lecture. So there is a complete binary tree. Let's talk about it again. Let's repeat it again as we have discussed it already in the previous lecture. So what is a complete binary tree? There is a new definition here. A complete binary tree is a tree that is completely filled with the possible exception of the bottom level. The previous definition was a complete binary tree is a tree that is completely filled and all the leaf nodes are at level D. This was the previous definition of the complete binary tree. Now we have a new definition, and that definition is saying that a complete binary tree is a tree that is completely filled with the possible exception of the bottom level. It means that it will be filled. However, there is a possibility, there is an exception that the lower level, the bottom level of the tree may be unfilled. So the tree will still be called a complete binary tree. The bottom level is filled from left to right. So however, we will follow the convention, we will follow the rule that it will be filled from left to right. Different definition of complete binary tree than an earlier definition we had. Earlier we have a definition that was saying that all the leaf nodes of a tree, if all the leaf nodes of a tree at level D, then such a binary tree is called complete binary tree. So this is a different definition. The earlier definition could be called a perfect binary tree. So we can say that the tree, according to the first definition or the earlier definition, and that definition is if a binary tree having all of its leaf nodes at level D, then such a binary tree is called perfect binary tree. And if there are some exceptions and there are some missing nodes at the bottom level, then that kind of a tree is called complete binary tree. Now here, this is the example. You can see you have the root node A, then B, C, D, E, F, G, H, I, J. These are the nodes, and if you see at the level D, this is the level D. And at this level, this is the level D. This is the total depth. However, we have some missing nodes, this one, and all these are at the bottom level. Here we have missing nodes, and it means that at level D, the tree can be empty. However, it is filled on the upper side. And here you can see the filling of the tree at the bottom level is from left to right. You can see. Okay. And according to the new definition, this is a complete binary tree. And we have
5 nodes missing here at the level D. Still, it is called a complete binary tree. However, this is not a perfect complete binary tree. This is not a perfect complete binary tree. This is just a complete binary tree. Recall that such a tree of height h has between 2 raised to the power h to 2 raised to the power h plus 1 minus 1 nodes. So if we have a complete binary tree, then we have already discussed some rules in our earlier lectures about binary trees, that there is a property. If the height of the tree is h, then we can say that there will be number of nodes in the range between 2 raised to the power h or 2 raised to the power h plus 1 minus 1. The height of such a tree is thus log 2 of n. Log 2 of n, okay? Where n is the number of nodes in the tree. और log 2 of n में जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसमें आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है विदाउट डेसिमल. You have to take the value without decimal, where n is the number of nodes in the tree. Because the tree is so regular, it can be stored in an array. No pointers are necessary. So if you have a complete binary tree, or if you have a perfect complete binary tree, then such a tree is so regular. The pattern of the tree is so regular, so we can easily represent such a tree in an array. And for the implementation of such kind of a tree, we will not be required to implement pointers, because pointers are not easy to implement. And if there is an error in the implementation of the pointers, it will cause severe problems in your software or in your program. So the handling of the pointers is not so easy, because this is working at the memory level. The pointers are working with the memories directly. So if we have complete binary trees and we have perfect complete binary trees, then we have a solution, and that simple solution is to implement those trees on arrays. So here you have this complete binary tree, and at the bottom level here we have this array, as you can see, and the array index starts from 0 to 14. So it means that we have an array of size 15. So let's suppose this is the array, and this is the complete binary tree. Do you agree this is the complete binary tree by definition? Yes, sir. Okay. So what we will be doing, we will keep left, we will keep empty the first index, that is index 0. And we are not using this index by purpose. Intentionally, we are not using this space. And there is a reason for that I will be telling you. So from the index 1, we will start and we will move forward. So the first element at the tree, at the complete binary tree, is its root node, and this is the starting point of the tree. That will be stored at index 1. Then B at index 2, C at index 3, D at index 4, E at index 5, F at index 6, G 7, H 8, I 9, J 10. So here we have completely stored all of the elements on an array. So this is very simple. We can store a complete binary tree because this is so regular tree. We can store the nodes of that tree, we can represent it over an array. However, there is a problem.
how to define the relationship between the nodes. Like A is the root node, B and C are its left and right subtrees respectively. Then B having D and E as its left and right subtrees. Then D having H and I its left and right subtrees. So how we will represent those relationships on an array? Through pointers we can do that. We can move forward in the arrays. However, how we can move along the nodes in an array while implementing this on an array? Let's see. For an array element at position I, the left child is at 2i, the right child is at 2i plus 1, and the parent is at I divided by 2. This is I divided by 2 और उसकी positive value. ठीक है? So we have a solution. If we implement a complete binary tree on an array, and here you can see this array. So we have represented all the nodes. So what will be the formula? How we can represent the left child and the right child of a node? That formula is that if the root node is I, let's suppose this is I, then the left child will be at 2i and its right child will be at 2i plus 1. Let's see if this is going to to if this formula is going to validate or not. Let's see this. From this example, you have A, and there is a left child of A, that is B, and C is its right child. So if A is I, then its left child will be 2i. So I की value क्या है? Index की value 1. So if you multiply it 2 into 1, you have 2. So at 2 you have this left child. This is working. Then you have 2i plus 1. This formula is used for the right child or right subtree. So 2i plus 1, what will be the value? 3. That is 3. So you can see that if the parent is at index 1, then its left child will be at 2i, that is index 2, and its right child at 2i plus 1, that is index 3. Let's suppose we are taking this node, that is let's suppose we are taking a node, let's suppose okay, let's suppose we are talking about E. So E is, if E is I, the value of I is 5 here. So what will be its left child? इसका left child क्या होगा E का? 2i, और 2i पे value क्या बनेगी? 2 into 5, that is 10. ऐसे ही है. So here we have the J, and here you can see J. J is at its left subtree. Then we have for the right subtree, that is empty. There is no tree. There is no node. So 2i plus 1, 2 into 5 plus 1, 11. तो यहाँ पे देखें ये empty. ठीक है? So this property is working. This solution is working. We can implement complete binary trees on the arrays. Why we can implement that? We can easily represent their relationship, the nodes, its left child and its right child, and then the parent of those childs. We can easily represent them by this formula: I, 2i, 2i plus 1, and I divided by 2. For any array element at position I, the left child is at 2i, the right child is at 2i plus 1, and the parent is at I divided by 2 and its positive value.
And this is working. I have already explained it to you. Now, if we see the complete binary tree, the same example, and its array representation, then we will find an important property. What is that property? So if you see the index of the array, that is from 1 to 10, and if you see the number of elements represented on the array, they are represented in a traversing order, and that traversing order is level order traversing. लेकिन लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग आपके पास ऐसे ही होती थी कि वो लेवल बाय लेवल मूव करती थी. So at level 0 we have one node. Let's suppose that is level 1. So we have one node, that is the root node A, and we have placed it at index 1. Then at level order 1 we have the second node, then we have the third node, fourth, fifth, sixth, seventh, and the change in the node is according to the levels of the tree. So this is called the level order traversing, or the representation of a complete binary tree on the array is level order. So array index is working as level order numbers. Here you can see. Now, here is a question. And the question is that if this is so easy to represent the whole tree as it is on the array, and we can define its relationship, then why don't we store all binary trees in arrays? Why using pointers? Why we are moving towards the difficult solution? So the answer for this question is that all the trees will not be complete binary trees, or all the trees will not be perfect complete binary trees. So you know that array is using contiguous memory locations, and it will be difficult for us if we have larger trees to implement. Then it will be so difficult to implement that binary tree, complete binary tree, or any kind of a tree having a lot of nodes. It will be difficult for us to implement that on arrays. And in that kind of a situation where we have irregular shapes of the trees, that is not complete binary or not perfect complete binary, then we must have to implement pointers. Now, any question about this? The properties of the complete binary trees. Any question? We will be using these properties in our next topic, that is the heap ADT, heap data structure. Any question? G. No, sir. Okay. So we will move forward, and now you are seeing the lecture slides, and that is moving. Still तो नहीं है ना? No, sir. अच्छा जी. The heap ADT. Heap abstract data type. ADT stands for abstract data type, and you must know the definition of abstract data type. Heap. What is heap? A heap is a complete binary tree. So देखें जो हमने complete binary tree की properties पढ़ी हैं, उन्हीं को हम आगे utilize कर रहे हैं, और उन्हें हमने recall इसलिए किया, उन्हें इसलिए पढ़ा क्योंकि हम heap को complete binary tree के तौर पे implement करना चाहते हैं. So a heap is a new ADT. However, a heap is a complete binary tree that conforms to heap order. The heap order property: in a min heap, for every node x, the key in the parent is smaller than or equal to the key in x.
or the parent node has key smaller than or equal to both of its children nodes. So what is a heap? Heap is not a new thing for you. It is just like a complete binary tree, and that follows a specific order, and that order we name it as, or we call it as, the heap order. So there are two types of the heap orders, that is min heap and the max heap. So what is a min heap? For every node x, the key in the parent is smaller than or equal to the key in x. So let's see, and let's explain to you with examples so that you can easily understand what is heap and what is the heap order. So this is a complete binary tree, and this follows the heap order. And what is the heap order? There are two types of heaps. One is called the min heap and the other one is called the max heap. अगर रूट पे जो नोड अवेलेबल है, आपको पता है कि हर नोड जो होता है बाइनरी ट्री का वो रूट नोड होता है, ठीक है? तो पहला रूट नोड जहां से ट्री स्टार्ट हो रहा है, that is node 13. So if you see at the left subtree and at the right subtree, you have 21 and 16. So the left subtree, the value in left subtree is larger than its root, and the value in right subtree is also greater than its root value. So 21 and 16 both are greater than 13. Then आप देखें 21 के left और right subtrees देखें. So 24 is greater than 21, 31 is also greater than 21. Then if you move down at 24, the root, its left subtree is 65 and right subtree is 26. So देखें आपके पास ये है heap order. अगर आपका रूट नंबर जो है वो स्मॉलर है और उसके लेफ्ट और राइट सब ट्रीज में जो नंबर्स हैं वो उनसे ग्रेटर हैं, तो ऐसे हीप को हम क्या कहते हैं? मिन हीप कहते हैं. ऐसा हीप ऑर्डर क्या कहलाता है? मिन हीप कहलाता है. हमेशा मिन हीप में क्या होगा कि जो रूट पे नोड है वो स्मॉलर होगा अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड से, ठीक है? सो अगर आप राइट सब ट्री में जाएं तो यहाँ पे आपके पास एक नोड है 16 और 16 का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो 19 है, दैट इज ग्रेटर देन 16. इसी तरह इसका राइट चाइल्ड जो है उसकी वैल्यू है 68 एंड दैट इज आल्सो ग्रेटर देन द रूट वैल्यू 16. क्लियर? So such kind of a heap is called min heap. Min heap. Now this is not a heap. Heap property violated. Heap property violated. Why we are not saying that this is not a heap? If you see these 2 points, देखें यहाँ पे 13 है, रूट की वैल्यू क्या है? 13, और 13 से ग्रेटर वैल्यू है 21 एंड देन 19. यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है? उसके बाद 21 के बाद 21 से ग्रेटर वैल्यूज होनी चाहिए एज लेफ्ट और राइट चाइल्ड. 31 is okay. However, here is the problem. This node is not following the heap order. This is doing the violation of the heap order. It should have been, it should be greater than this 21. Okay? So this is the violation of the heap order. And here again, 19 से smaller नहीं होनी चाहिए वैल्यू, और यहाँ पे इस नोड की वजह से heap order violate हो रहा है. So that's why we are saying that it's not a heap, and here the heap property is being violated. Clear? Analogously, we can define a max heap where the parent has a key larger than the two children. Thus, the largest key would be in the root. So, same as
conversely or same as to the min heap, we have a max heap, and the property of the max heap is that we will be having the largest number of the whole tree at the top of the tree, that will be the root of the tree, that will be the starting point of the tree, and all of the other numbers will be smaller than that root node number. However, in min heap, the root node number will be the most smallest number. So here is a heap, and this is an existing heap. This is a complete binary tree, and we have values 13, 21, 16, 24, 31, 19, 68, 65, 26, and 32. So if we represent them on an array, and we will start from index 1, that at index 1 the number is 13, then we have 21. So level order traversing करते हुए हम इन numbers को array के ऊपर place करेंगे. So we can do that. So 13, 21, 16, 24, 31, 19, 68, 65, 26, 32. So we have successfully represented this heap, which is actually a complete binary tree, on an array. So how to define their relationship? How we can know that 13 का जो left child है वो 21 ही है, और 13 का जो right child है वो 16 है? कैसे हमें पता लगेगा जी? सर जो हमने पीछे फार्मूले डिस्कस किए थे वो वाले 2i2 into जी जी जी, वही फार्मूले. अगर हमने देखें, लेट्स सपोज हमने 24 का पेरेंट देखना है, ठीक है? तो 24 कहाँ पे है? इंडेक्स 4 पे है. तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4. ठीक है, i की वैल्यू क्या है? लेट्स सपोज दिस इज i, एंड वी वांट टू सी द लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड ऑफ 24. तो 24 का लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू क्या होती है? 2i. 2 इंटू 4 8. देखें ये 65, यही है ना इसका लेफ्ट चाइल्ड, अगर यहाँ पे देखें आप. यस. इसी तरह अगर आप इसका राइट चाइल्ड देखना चाहते हैं तो इसका फार्मूला क्या है? 2i plus 1. So 2i plus 1 क्या होगा? That is 9. So we have 26 here, and that is rightly, that is very right. It is the right subtree or right child of the 24, node 24. So this property is working here. We can represent a heap on an array easily by using these formulas. So what kind of a heap is this? ये जो पिक्चर में आपको heap नजर आ रही है, ये min heap है या max heap है? आपका क्या ओपिनियन है? सर min heap है. This is min heap because in min heap the property is that we will be having the smallest number of the tree, the whole tree, at the root node. देखें जितने भी nodes हैं यहाँ पे 21, 16, 19, 32 up to level D, जितने भी नोड्स हैं उन सब की वैल्यू इस रूट नोड से ज्यादा है. ठीक है, इसलिए हम ऐसे हीप को मिन हीप कहते हैं. जबकि मैक्स हीप में क्या होगा? यहाँ पे ग्रेटर नंबर होगा और बाकी स्मॉलर होंगे उससे इन कंपैरिजन टू दैट. सो अब हम देखें, जब भी हम कोई नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम उस पर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं कि वो वर्क करेंगे या नहीं. तो वो ऑपरेशंस क्या है? लेट्स सपोज हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्शन. हम कोई नया नोड ऐड करना चाहते हैं तो वो क्या, कैसे ऐड होंगे? तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कंप्लीट बाइनरी ट्री में कि जो नए नोड्स हैं वो कैसे ऐड होंगे. देखिए नया नोड जो ऐड हो रहा है वो 31 का राइट चाइल्ड बन रहा है. उसको हमने 19 का राइट चाइल्ड क्यों नहीं बनाया, या 68 का लेफ्ट चाइल्ड क्यों नहीं बनाया? उसकी क्या रीजन है? सर What रूट is नोड the छोटा reason होना चाहिए. behind it? सर रूट नोड छोटा होना चाहिए ना.
नहीं, ये रीजन नहीं है, रीजन बताएं प्रॉपर, जो मैंने अभी डिस्कस भी की है जब हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। द रीजन इज दैट कि हमेशा जो भी नया नोड आएगा वो लेफ्ट टू राइट प्लेस होगा, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड से चलें तो पहला जो एम्प्टी स्पेस या पॉइंट आता है आपके पास वो यही है, ऐसे ही है। Yes, sir. The property is that we will insert the new nodes from left to right, ठीक है। और लेफ्ट से चलते हुए हमारे पास पहला जो एम्प्टी पॉइंट आता है या एम्प्टी या वेकेंट स्लॉट आती है, दैट इज एट 31 के राइट सब ट्री में, ठीक है। सो जो नया नोड इंसर्ट होगा वो हमेशा ऐसे ही होगा। अब जो नेक्स्ट नोड आएगा वो 19 के लेफ्ट में आएगा, और फिर उससे नेक्स्ट 19 के राइट में आएगा, फिर 68 के लेफ्ट में और 68 के राइट में, ठीक है। और इस तरह से फिर अगेन ये लेफ्ट से चलता जाएगा नए लेवल पे। सो हियर वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट नंबर 14। तो नंबर 14 कहाँ पे इंसर्ट हुआ? एट इंडेक्स 11 पे, ठीक है। और 31 का वो राइट सब ट्री बना या राइट चाइल्ड बना। अब 14 के देखें, 14 एक लीफ नोड है, ठीक है। उसके आगे चिल्ड्रन नहीं है, ना उसके लेफ्ट में चिल्ड्रन है ना राइट में। लेफ्ट और राइट दोनों क्या हैं? जीरो हैं। तो अगर आप देखें इसका लेफ्ट और राइट सब ट्री लें 2i प्लस 1 से, तो वो 12 और 13 बनेगा। नहीं, वो 12 और 13 नहीं बनेगा, बल्कि वो क्या बनेगा? 2i का मतलब है 22, ठीक है। तो 22 को हमने यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन लेट सपोज अगर आप कहें कि ये अरे ऐसे 14 से आगे चलती जा रही है, 14 इंडेक्स से इट इज मूविंग फॉरवर्ड, देन वी कैन से इसका जो लेफ्ट चाइल्ड अगर कभी आया तो वो 22 पे होगा और 23 पे इसका राइट चाइल्ड होगा। करंटली दिस इज नल, ठीक है। सो इंसर्ट 14, देन what we have to do for the insertion of the number 14. So we need to insert that number at index 11 of the array, and we have to make this newly inserted node as the right child of node 31, that is 5, fifth का node 5 का right child ये बनेगा, ठीक है इसका। So हमें इसका connection, we have to point this index 5 at index 11. So we have to fix these formulas as well. While inserting a new node, we have to consider them. अब देखें यहाँ पे जैसे ही मैं 14 को इंसर्ट करता हूं तो क्या होता है? मिन हीप की प्रॉपर्टी, ये क्या है? एक मिन हीप है। तो क्या मिन हीप की प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही? जी, दिस इज अ मिन हीप। जी, इस बात का आंसर दें कि क्या जब हम नया नोड कोई भी इंसर्ट करते हैं तो वो ऐसे ही इंसर्ट करते रहेंगे या हमने कुछ प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करना होगा? जैसे बाइनरी ट्री बनाते हुए हम लेफ्ट में वही नोड रखते थे जो रूट से स्मॉलर होता था, और राइट में वही नोड रखते थे जो रूट से ग्रेटर होता था राइट सब ट्री में। सो इसलिए यहाँ पे भी हमें हीप ऑर्डर्स को फॉलो करना है। सो हीप ऑर्डर क्या है? दिस इज अ मिन हीप, सो वी हैव टू फॉलो द मिन हीप ऑर्डर, एंड द मिन हीप ऑर्डर सेज दैट 14 जो है, जो कि आप न्यूली इंसर्टेड नोड है, उसे आप प्लेस नहीं कर सकते 31 के राइट में, क्योंकि वो 31 से स्मॉलर है। 31 से ग्रेटर नंबर आना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे पास इस नोड को हमने इंसर्ट करना है तो इंसर्शन परफॉर्म करनी है ऑन द हीप, सो हीप ऑर्डर को हमने मेंटेन भी रखना है और
इस नोड को इसके प्रॉपर प्लेस पे एडजस्ट भी करवाना है। तो ये देखें, जब भी जैसे ही ये नोड प्लेस हुआ है तो मैंने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी this is not its proper place, because here if you place it properly, then this is violating the property of the min heap. So what you will do, we will be doing, हम क्या करेंगे, दो एम्प्टी स्लॉट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। दो एम्प्टी स्लॉट्स क्रिएट करेंगे इंडेक्स 11 पे और इंडेक्स 31 पे, सॉरी इंडेक्स 5 पे। अब हम क्या करेंगे, हम इन दो वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 31 को हम शिफ्ट करेंगे फ्रॉम 5 टू 11 और एक एम्प्टी नोड को हम चलाते जाएंगे और हर दफा हम एक कंपैरिजन करेंगे और नया जो इंसर्ट होने वाला नोड है हमारे पास, दैट इज 14। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 14 विल बी कंपेयर टू इट्स रूट। सो रूट जो है वो ग्रेटर है, तो रूट जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और 14 अपवर्ड जाएगा, लेकिन अब भी ये प्लेस नहीं होगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जो लेवल 5 इंडेक्स 5 पे जो नोड है उसका पेरेंट क्या है, उसका पेरेंट है 21 एट इंडेक्स 2। सो व्हाट वी विल डू, we will compare now this one with 14। so यहाँ भी इसकी हीप ऑर्डर की वायलेशन हो रही है। so we will, what we will do, we will move forward करेंगे तो 21 डाउनवर्ड मूव करेगा और 14 अपवर्ड जाएगा। अब 14 को अभी भी हम प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि 14 आ गया है इंडेक्स 2 पे और इंडेक्स 2 का जो पेरेंट है वो इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है, दैट इज 13। So the parent of index 2, the child at index 2, that is at index 1, and the value of that parent is 13. So we will compare this 14 and 13. Now in the comparison we will see that this is not violating the min heap property. So we will place 14 here as a regular number. So 2 पे जो है हमारे पास क्या आएगा, नंबर 14 आएगा। So अब आपने देखा जो इंसर्शन होगी that is not that much simple in the min heap or the max heap. You have to follow the heap property. You have to maintain the heap property. And to maintain the heap property, you have to compare and move down the number of elements, and you have to find its suitable place according to the heap property. Clear? If not clear, you can ask a question. ओके देखें, हमने क्या किया है, जब भी हमने 14 को या किसी भी नए नंबर को हम इंसर्ट करने जाते हैं तो हम एक्सचेंज का एक फंक्शन बनाएंगे। वी विल मेक और क्रिएट द फंक्शन नेम्ड एज एक्सचेंज, एंड व्हाट वी विल डू, we will insert the new node temporarily and we will compare it to its parent, with its immediate parent. So at index 11 we have this 14, number 14, and the parent for this is number 5, index 5. So we will compare it. If this is the in the violation of the heap order, then we will exchange. So we have exchange, then we will move upward जब तक के रूट तक हमारा कंपैरिजन नहीं हो जाता या उसे एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिलती, द न्यूली इंसर्टेड number got its perfect or specific space until or unless at that point we will be performing this exchange. देखें जी, and here you have now, अब हम एक नया नंबर इंसर्ट करने जा रहे हैं, that is 15. So 15 is again violating the heap property. So 15 का immediate parent क्या है, at index 6. So 15 and 19 will be compared and they will be exchanged.
Then 15 and 16 will be compared. Again, we have violation. So we will exchange them. ठीक है, ये exchange देखें, array में भी देख रहे हैं आप और tree में भी देख रहे हैं. Then 15 and 13 will be exchanged and this is satisfactory, so there will be no change. The newly inserted node, that is 15, will be placed at index 3. This is how insertion will be performed in heap to maintain the heap order as well. Now, what is delete min? Now, finding the minimum is easy. If you see the min heap, then you will find the minimum node at the root node. So you already know that where is the minimum number at this heap or this complete binary tree. Finding the minimum is easy. It is at the top of the heap. Deleting it or removing it causes a hole which needs to be filled. Now, पहले हमने क्या किया, हमने इंसर्शन ऑपरेशन को देखा और इंसर्शन को हमने ऐसे देखा कि that insertion is easy, however we have to perform the exchange property and we have to find the proper place for that number to maintain the heap order. Now we are talking about the next operation, that is the delete operation. So if you want to delete the minimum number of a tree, then it is easy to do that. However, it will cause a hole which needs to be filled. देखें, जो ट्री का रूट नोड है वो आपने डिलीट किया तो वहां पे एक एम्प्टी स्पेस रह जाएगी. ठीक है, सो we have to fill it according to the heap order. So what we will do for the deletion operation, for the delete operation, देखें हमने delete min किया और अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं. इसका जो नेक्स्ट नोड है दैट इज एट इंडेक्स 2 14. तो 14 जो है वो अपवर्ड मूव करेगा. ठीक है, क्योंकि ये एक मिन नोड है या एक मिन हीप है. सो दैट्स वाई जो लेफ्ट और राइट में जो नंबर्स हैं उनमें से जो मिनिमम होगा वही ऊपर जाएगा. ठीक है, उसके बाद देखें 21 और 24 में मिनिमम नंबर कौन सा है, 21. देन 31 और 32 में मिनिमम नंबर कौन सा है, 31. और यहाँ पे आपका वो जो एम्प्टी नोड है और वेकेंट स्पेस है वो आ जाएगी और उसका इजीली डिलीट कर देंगे या हीप का जो साइज है उसे रिड्यूस्ड बाय 1 कर देंगे. delete min heap size is reduced by 1. This is how we will perform the delete operation on the min heap. Now let's talk about the build heap. We have now discussed the heap ADT. Then the two types of the heaps, min heap, max heap, and we talked about the heap order. Then we tried to understand the insertion operation on the heap while maintaining the heap order, and then the delete operation on the heap or the remove operation on the heap. And in that case as well, we will maintain the heap order. Now, let's talk about building or making a heap. Suppose we are given as input n keys or items, and we want to build a heap of the keys. So we have number of elements or number of keys, and we have to make a heap. And we don't know the exact number, and the number of keys or number of elements, let's suppose that is capital N. Obviously, this can be done with capital N successive inserts. Each call to insert will either take unit time, that is leaf node or log base 2 of n. If new key percolates all the way up to the root, so there is a specific word that is called percolate. Percolation देखें, जब आप
पानी बॉयल करते हैं, ठीक है, कॉफी बनाने के लिए या चाय बनाने के लिए, तो पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और परक्यूलेट अप एंड डाउन। ठंडा पानी जो है वो नीचे मूव करता है, और जो गर्म पानी है वो इन द फॉर्म ऑफ द स्टीम मूव अपवर्ड्स. So this phenomena is called percolation. Percolate up and percolate down. So, and this formula is also applied in the coffee maker. जो automated coffee makers होते हैं वो इसी formula के तहत, percolation process के तहत move up and move down. इस formula के तहत वो अच्छी कॉफी आपके लिए prepare करते हैं. So each call to insert will either take unit time, that is up to the leaf node, or log base 2 of n if new key percolates all the way up to the root. The worst time for building a heap of n keys could be n log base 2 of n. It turns out that we can build a heap in linear time. Suppose we have a method percolate down of P which moves down the key in node P downwards. This is what was happening in delete min. देखें जब आपने delete min को पढ़ा, so delete min में क्या हो रहा था? देखें वो नंबर percolate down हो रहे हैं, ठीक है, और जो नंबर आपने प्लेस करना है न्यूली इंसर्टेड नंबर वो परक्यूलेट अप हो रहा है, और जो एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग नोड्स हैं, वो परक्यूलेट डाउन हो रही हैं, ठीक है, और इस तरह से आप मिन हीप के अंदर इस फिनोमिना को फॉलो कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग इन डिलीट मिन. लेट्स सी, इनिशियली वी हैव n कीज और n की वैल्यू है 15. हमारे पास 15 नंबर्स हैं, तो हम इनका हीप कैसे बनाएंगे, ठीक है. And these 15 numbers are 65, 31, 32 and up to 70 and 12, and that is from index 1 to index 15. So हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 15 नंबर्स हैं, और हमने इनका एक हीप बनाना है. तो हीप कैसे बनेगा? कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगा, और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री जो होगा ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग को फॉलो करेगा, और इसके अकॉर्डिंगली कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगा. यानी रूट नोड क्या बना आपके पास? 65 लेफ्ट में, 31 राइट में, 32, देन यू हैव दिस 26, 26 के बाद आपके पास 21 है, 13 है, 24, 15, 14, 19, 16, और इस तरह से आपके पास जो लास्ट नोड है दैट इज 68, और इसके जो लेफ्ट और राइट हैं 70 and 12. So that will be represented. So if you place the formula 2i and 2i plus 1, तो उसके accordingly 68 का 2i पे 14 पे लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, और 2i plus 1 15 पे इसका राइट चाइल्ड. So this is okay. This property is okay. However, अगर आप इस ट्री को देखें तो क्या ये मिन हीप है या मैक्स हीप है? ये किस टाइप की हीप है जी? मैक्स हीप है. दिस इज मैक्स हीप. देखें हर लेवल पे क्या हो रहा है, वैल्यू डाउन से डाउन होती जा रही है. क्या ऐसा ही है? जी नहीं, ये मैक्स हीप नहीं है. आप देखें 68 65 से ग्रेटर है, 70 भी 68 और 65 से ग्रेटर है. सो दिस इज नॉट अ मैक्स हीप. मैक्स हीप में तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो रूट पे अवेलेबल होता है. तो क्या ये मिन हीप है? जी ओ सर. So this is not a min heap and not a max heap. This is violating the property of the heap. Actually, this is just a complete binary tree.
यहां तक ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है, लेकिन ना ये मिन हीप है और ना ये मैक्स हीप है। सो जब भी आपने हीप बनानी है और आपको नंबर ऑफ नोड्स गिवन होंगे, तो सबसे पहले आपने उसका एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है। देन आपने जो भी हीप क्रिएट करनी है, दैट इज मिन हीप और मैक्स हीप, यू हैव टू फॉलो दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कैसे करनी है? The general algorithm is to place the n keys in an array and consider it to be an unordered binary tree. The following algorithm will build a heap out of n number of keys. And that algorithm is for I equals to n divided by 2, I greater than 0, I minus minus, percolate down of I. So percolate down हमने एक मेथड या फंक्शन बनाना है जिसको हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, और वो हर नोड को चेक करेगा। ठीक है, तो चेक करता हुआ मिन हीप या मैक्स हीप को क्रिएट करेगा। सो लेट्स सपोज अब हम इसी फार्मूला, इसी एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं इस एग्जांपल पे। सो फॉर लूप में क्या हो रहा है? सबसे पहले i इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2। सो i की वैल्यू क्या है? दैट इज 15। 15 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ रहा है आपके पास? 7। ठीक है, और 7 कहाँ पे है? So why I equals to n divided by 2? Because we are representing the binary tree, the complete binary tree, in the form of 2, left or right. One reason is this, and the second reason is this, that we are using the formula 2i plus 1. So 2, that's why we are dividing the total numbers of nodes divided by 2, the total number of elements or the keys divided by 2. So then we will get 7. So at index 7, from the index 7 we will start the value of I, और यहाँ पे अब हम percolate down को यूज करते हुए हीप ऑर्डर को अप्लाई करेंगे। देखें 68 जो है वो क्या है? ग्रेटर है 12 से। सो हम क्या करेंगे? 12 जो है अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, देन 12 जो है वो कंपेयर होगा। सबसे पहले देखें 7, इसकी वैल्यू क्या हुई? 7, और फिर उसके बाद आई की वैल्यू को हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, 7, देन हम 6 पे आए। 6 में देखें इस लेवल पे तो 5 जो है, 5 is smaller than 19, so it will move up, percolate up. Then you have this 21 and 14, 14 will move up. ठीक है, so we have finished the slides. Let's open up the new lecture slides. So wait a moment ji. So what we are doing, we are using the formula of percolate up and percolate down, and what we will do, we will follow the algorithm, and that algorithm is saying that you have to divide the total number of keys with 2. So in this example we have the total number of keys as 15. So 15 divided by 2, we have 7.5. So we will take the positive value, and that is 7. We will take the value without the decimal point. So that is 7. So if we take the value as 7, then that is the this node 68, and then what we will start calling the function percolate down of I. ठीक है, सो percolate down 68 जो है वो डाउनवर्ड जाएगा और 12 जो है वो अपवर्ड आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दी मिन हीप। इसी तरह आपके पास 5 जो है वो अपवर्ड जाएगा, और इसी तरह 21 और 14 एक्सचेंज होंगे, और आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जा रही है। ठीक है, आई की वैल्यू आपके पास डिक्रीमेंट होती जा रही है।
नाउ I at 4, तो 13 जो है वो मूव अप करेगा. I की वैल्यू 3 होगी. तो अब आप देखें, अब आपका बॉटम लेवल, now you will be having your comparisons up to the bottom level. So here, up till here, you have the comparison at the level D, at the leaf node level. So 32, 5, 16. So सबसे पहले 5 and 32 कंपेयर होंगे और ये परक्यूलेट डाउन होगा. 32 5 अपवर्ड मूव करेगा. देन 5 और 16 जो है वो कंपेयर होंगे और इस तरह से 5 आपके पास ऊपर आ जाएगा. देन यू हैव 31. 31 जो है वो एक्सचेंज होगा. 13 स्मॉलर है, 13 फिर और 31 जो है वो 24 से भी ग्रेटर है. सो इसलिए ये मूव डाउन करेगा. Then we will be having the value of I which will be decremented to 1, and this 65 will be compared, and the largest value is at the right subtree. ठीक है. तो राइट सब ट्री में देखें लार्जेस्ट वैल्यूज या स्मॉलेस्ट वैल्यू पड़ी हुई है. ठीक है, सॉरी, राइट सब ट्री में ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो कि 65 से स्मॉलर है. So it should be exchanged. Then 65 will be compared with 12. So this will again be exchanged and 65 will be placed over here. So now if you see this heap which has been developed by the successive attempts of the percolate down, and we have decremented the array index by 1 to reach to the next level of the heap. And by doing that, by calling that function percolate down, we have find this heap. So what kind of a heap is this? क्या ये still एक order में है या नहीं है? जी, अगर आप इस हीप को देखें तो ये एक मिन हीप है आपके पास. मिन हीप की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके रूट पे जो नोड होता है उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड उससे बड़े होते हैं. ठीक है. सो 5 है रूट पे, 13 एंड 12 आर ग्रेटर देन 5. देन अगर आप लेफ्ट सब ट्री में मूव करें तो 13 जो है उससे ग्रेटर है 24 एंड 14. फिर 24 से ग्रेटर हैं नंबर्स 26 एंड 31. then 15 and 21 are greater than 14. And then if you move towards the right subtree, you have 12. 12 is smaller than 16 and 65, so this is okay. Then 16 is smaller than 32 and 19, and 65 is smaller than 70 and 68. So by using this method, we have built a heap. If we are being provided with n number of elements, we can develop a heap by using our algorithm, and that algorithm is saying that first of all, I equals to n divided by 2, and then we will move forward by decrementing the operator, and in the body of the for loop we will call the function percolate down, and this will create a min heap for us. Any question? So this is the main algorithm for I equals to n divided by 2, I greater than 0, I minus minus. So why we are taking I equals to n divided by 2? Because we have to work with the last level which is up to the leaf level. ठीक है. लीफ नोड्स पे अगर आप percolate down को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, so it will not work because leaf nodes having no right and left subtree. So you have to start from such a node which is having its left and right child. So that node is 7, and how to reach to this point? That is by dividing the number of elements or the number of keys to be divided by 2. Then you can reach the level from which you can start
or you can call the percolate down method, and in this way all the tree, all the binary tree, all the complete binary tree will follow the heap order. And here in this example, we have maintained the min heap order. So there are, with these operations like the insert operation, the delete operation, and the build operation, we have some other operations as well for the heap, and they are also called the heap operations. For example, the first operation is named as decrease key, p comma delta. It is taking two arguments or two parameters. So what this function will do, what this operation will perform, lowers the value of the key at position P by the amount delta. Since this might violate the heap order, the heap must be reorganized with percolate up in min heap or down in max heap. Then you have another operation that is called increase key, and that is also taking two arguments or two parameters, p comma delta. P is the point from where it will start, and delta is the amount, that how much it should move towards a certain position. So opposite of decrease key, this is increase key, not the decrease key. So it is opposite to that. So what it will do, it will maximize the value of the key at position P by the amount delta. Since this might violate the heap order, the heap must be reorganized with percolate up in min heap or down in max heap. So remove of P removes the node at position P from the heap. This is done by first decrease key P comma delta and then performing delete min. So the remove operation is also important, and it is taking one argument, that is P. So this will remove the node at position P from the heap, and this is done by first decrease key. First of all, remove operation is basically, it will internally call another operation, that is decrease key. So first of all, the decrease key will be performed, that is P comma delta. Delta is the ratio up to which it will be decreased, and then the delete min will be called and it will perform its operation. Thus, you can achieve the remove operation by using the two internal operations, decrease key and delete min. Now let's see the heap code in C++, the heap implementation of the C++. Again, you have a template class E type. So why you are taking the template class? Because you want to use this one class to handle various type of the data types, int, float, char, string. So you want to handle all those data types with the single class of this heap. So that's why you are making it a template class. So template, then class E type. This is the E type is the type parameter. Class heap public heap int capacity equals to 100. So this is the size of, actually the size of the heap. The capacity of the heap is being defined over here. The number of nodes maybe, it will be, the number of nodes will be 100. Then you have this method or operation void insert, and this is working on the type parameter const e type ampersand x, and ampersand x is the number which you want to insert. Void delete min, e type ampersand min item. Min item represents that number which you want to delete from the heap. Then you have const e type ampersand get min.
Then you have the following operation: bool is empty, which will be either true or false. Then bool is full, the heap is empty, or the heap is full, because you are implementing heap on the arrays. So the internal implementation for the heap is arrays, because heap is based on complete binary tree. So you know that there is a limitation to an array. It should be having some certain size. So you must be requiring these two methods, or these two operation, is empty and is full, to check before inserting an element to the heap. You have to check the is empty operation and the is full operation. Before deleting, you have to check is empty operation, and before insertion, you have to check the is full operation. Int heap e type scope resolution operator get size. This will return the size of the heap after each insertion or deletion. Private int current size. So देखें पब्लिक में हमने तमाम मेथड्स रख दिए, ठीक है, टेम्पलेट क्लास हीप के. देन इसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, ये तमाम के तमाम वो वेरिएबल्स हैं जो इन अरे, जो इन ऑपरेशंस या इन मेथड्स के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं. int current size, number of elements in the heap. E type static array, the heap array. E type uh, be will be associated with the pointer array, because all the heap numbers will be placed on an array. Int capacity. Now this is the variable which will store the total numbers of the heap. Void percolate down int whole. Now here this is the prototype or the declaration of the percolate down method, and it will take one argument, that is the int whole, because according to that whole it will move or move down the elements and to maintain the heap order. Now this is another hash include heap.h, template class e type, heap e type, scope resolution operator, heap int capacity, array equals to new e type capacity plus 1, current size equals to 0. देखें जब भी एक नई हीप क्रिएट होगी तो उसका जो इनिशियल साइज होगा वो 0 होगा, और जो अरे है, जो भी अरे आप यूज करेंगे, डायनेमिकली क्रिएट करवा रहे हैं एक अरे को न्यू ई टाइप को यूज करते हुए, ठीक है, न्यू फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, एंड दैट इज स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल अरे. और अरे एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें आप इसका एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं. और ये डायनेमिक अरे जो है, ये हमेशा इसका जो साइज होगा, लेट्स सपोज अगर इसका साइज 100 है तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी 100 होगी, और 100 प्लस 1 क्या होगा, 101. Why you are doing this? Because you will start the array from index 1, not from index 0. इसलिए आपको कैपेसिटी को +1 करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर? Any question? No question. All of you are very intelligent and understanding the topics very quickly. Okay. Now the insertion code, the insert operation, and this insert operation will take an argument x, which is the item or element which is going to be inserted into the heap, and then after the insertion we have to maintain the heap order as well. Duplicates are allowed. Here we will not consider the duplicate numbers. So these were the comments of the program. Now template class e type, bool, heap, e type, scope resolution operator, insert const e type %x, if is full. अगर heap जो है नया नंबर
इंसर्ट करने से पहले आप हीप की कैपेसिटी को चेक करेंगे. So if the heap is full, then cout insert heap is full and L return 0. So the new number will not be inserted. So if this is not true, then you will move down. Int whole equals to plus plus current size. So what you will do, you will increment the index of the array जो कि करंट साइज है, लेट्स सपोज वो 0 पे है, आप नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नई एक हीप बनाने जा रहे हैं. सो अगर आपके पास वो 0 पे है तो प्लस प्लस करंट साइज की वजह से सबसे पहले क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट होगा और करंट साइज पॉइंट करेगा, करंट साइज विल नाउ पॉइंट टुवर्ड्स द इंडेक्स 1, and that place will be stored or assigned the name as int whole. For ये फॉर लूप हमने एक लगाया और इसकी जो इनिशियलाइजेशन है उसको हमने एम्प्टी रखा, बिकॉज ये इनिशियलाइज हो रहा है अपर स्टेटमेंट के अंदर. हेयर इफ यू सी, यहाँ पे देखें ये इनिशियलाइजेशन हमने कुछ भी नहीं रखी, ठीक है. सो ये स्टेटमेंट को से इनिशियलाइज होगा. होल ग्रेटर देन 1 एंड, सो यहाँ पे टू कंडीशंस, देयर आर टू कंडीशंस हियर. If whole greater than 1 and this is logical and, so if both of the conditions are true, then this for loop will move forward. Whole greater than 1 and x less than array whole divided by 2, semicolon, whole divided equal to 2. So ये देखें, ये आप एक ही स्टेटमेंट में दो पर्पसेस अचीव कर रहे हैं, ठीक है. होल डिवाइडेड बाय 2 एंड देन अगेन स्टोरिंग इट इनटू द होल. So you can do that. This statement can be done, or you can write it separately as well. Array of whole is equal to array of whole divided by 2, and array of whole equals to x. Template class eType, void heap eType, scope resolution operator, delete min, eType ampersand min item. Now here you will check before deleting any element from the heap, you have to check whether your heap is having an element or not. So you will apply the if is empty operation. If is empty, cout heap is empty, so you cannot delete any number. There is no existence of such a number. So this will be returned by the is empty. So if this is not true, then this statement will execute min item equals to array of 1, array of 1, array of current size minus 1. This will be decremented because you are deleting an element from the heap, and it will be percolate down of 1. So you will call the percolate down operation as well, and it will start from the index 1. So here whole is the index at which the percolate begins. Template class eType, void heap eType, scope resolution operator, percolate down int whole. The newly created empty space, the empty node. Int child, a variable, a local variable to this percolate down method. Int child eType, TMP, a temporary variable of eType, of template type, is equal to array of whole. For again the initialization is empty and the test condition is whole static 2 less than or equal to current size. If this is true, then you will move in the body of the for loop. And in the next section you have whole equals to child. Child equals to whole multiplied by 2 if child not equal to current size, ampersand, sorry, not the logical and array of child plus 1
less than array of child, child plus plus. Right child is smaller. If array of child less than temp, array of whole equals to array of child, else break. So this is how you are moving forward with the heap operation, and this heap operation is performing its main method or main function, that is percolate down. And you know logically that how the elements will be compared, and they will be moved down if you are following, whether you are following the min heap or the max heap order. So here you can see child equals to whole static 2 if child not equal to current size, and array of child plus 1 less than array of child, then child plus plus. If array of child less than TMP, array of whole equals to array of child, else break, array of whole equals to TMP. Now here you have this new method, that is get min, the get min method. So इसका भी आपने कोड डिफाइन किया, और ये भी टेम्पलेट क्लास के अंदर आपने रखा. टेम्पलेट क्लास ई टाइप, कॉन्स्ट ई टाइप, एम्परसेंड हीप ई टाइप, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट मिन. इफ नॉट इज एम्प्टी, रिटर्न अरे ऑफ 1. सो अगर आपका हीप एम्प्टी नहीं है तो आपके पास अरे का इंडेक्स 1 आ जाएगा, जो कि हीप को रिप्रेजेंट कर रहा है. टेम्पलेट क्लास ई टाइप, void heap e type, scope resolution operator, build heap e type, static an array, comma int n. For int I equals to 1, I less than or equal to n, I plus plus, array of I equals to an array of I minus 1, current size equals to n. For int I equals to current size divided by 2, I greater than 0, I minus minus, percolate down of I. So this is the main method where you will be calling the percolate down for the get min, and this get min will calculate the minimum number at a certain heap, or at a certain complete binary tree, where you have this minimum value, and this minimum value will be returned to you by the get min method. And how this min method will work: by using a for loop, and by using two types of the for loop. In the first for loop, it will initialize and apply the test condition on the array, and in the second for loop it will mainly call the percolate down by using the condition current size divided by 2. Now here is the isEmpty method for the heap. Bool heap e type, scope resolution operator is empty, return current size equals to 0. अगर current size equal to 0 है तो आपका heap क्या है? Empty है. Then you have is full method, ये उसकी body है, उसका code है, ठीक है. Now in is full, return current size equals to capacity. If current size is equal to the capacity of the array, then your heap is already filled up, and it will return true, and you will no more be required to insert the elements. Then you have the next function, that is get size. This will return the size of the heap. What is the size of the heap? So it will return the current size. The value maintained by the current size will be returned, and this will show you the size of the heap. Size of the heap is full,
Any element over there, any place for the newly inserted element or not, and is empty. Before applying the delete operation or remove operation, you have to check the is empty, and this is the code, or this is the body of the function, the definition of the function. Now build heap in linear time. How is build heap a linear time algorithm that is better than n log base 2 of n? We need to show that the sum of heights is a linear function of capital N number of nodes. Theorem. So here we have to understand this theorem for the understanding of that we are saying that build heap is a linear time operation. That is, it is better than n log base 2 of n. So let's understand this theorem. For a perfect binary tree of height h, we are talking about perfect binary tree, not complete binary tree. Now, what is a perfect binary tree? Perfect binary tree is a tree whose all the leaf nodes are at level D. So if we take the height as h, then it will be containing the number of nodes 2 raised to the power h plus 1 minus 1 nodes. The sum of the heights of nodes is 2 raised to the power h plus 1 minus h plus 1 or n minus h minus 1. So let's see this theorem and let's prove it. It is easy to see that this tree consists of 2 raised to the power 0 nodes at height h. देखें जब आपके पास ट्री की हाइट 0 होती है तो वहां पे नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं 1 और एंड वी कैन रिप्रेजेंट दैट एज 2 रेज टू द पावर 0 और जब आपके पास हाइट 1 होती है तो वहां पे 2 नोड्स होते हैं और उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 1 नोड्स एट हाइट h माइनस 1. और देखें अगर हम 0 लेवल को h कहें तो उससे जो नेक्स्ट लेवल आएगा उसे हम h माइनस 1 कह सकते हैं और फिर उससे जो नेक्स्ट लेवल आएगा उसे हम h माइनस 2 कह सकते हैं. एंड इन जनरल 2i नोड्स एट h माइनस i. ठीक है, 2 रेज टू द पावर 0 को हम क्या कह सकते हैं h माइनस 0 h. ठीक है, और 2 रेज टू द पावर 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइट h माइनस 1. देन 2 रेज टू द पावर 2 को हमने h माइनस 2 कहा. और अगर हम इसको जनरलाइज करें, इफ वी मेक इट जनरलाइज, देन the ith level we can call it as 2 raised to the power I and it can be written as h minus I. Agree? Yes, sir. So ये देखें, ये वो हाइट्स हैं जिनको मैंने अभी आपको बताया, जिनको मैंने रिप्रेजेंट किया h माइनस 1 h माइनस 2 h माइनस 3. देखें उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ. तो अगर यहाँ पे ये चलते चलते i पे आ जाता है तो 2 रेज टू द पावर i और इसको हम लिख सकते हैं h माइनस i. For generalization we can write it like this. Clear? So the sum of heights of all the nodes is then. तो theorem क्या कह रहा है? Theorem is saying that for a perfect binary tree of a height h containing 2 raised to the power h plus 1 minus 1 nodes, the sum of the heights. So let's take the sum of the heights. So the sum of the heights will be s equals to summation 2 raised to the power I h minus I for I equals to 0 to h minus 1. और इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, अगर इसे हम ओपन अप करें तो पहली हाइट क्या होती है h, दूसरी हाइट क्या होती है h माइनस 1. ठीक है, तीसरी हाइट क्या होती है h माइनस 2 h माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन. और ये देखें 2 जो है इसकी वैल्यू भी साथ साथ चेंज होती जाएगी. ठीक है, 2 की यहाँ पे देखें इसकी 2 की पावर क्या थी 0. ठीक है, i की वैल्यू 0 है. ठीक है, 2 की पावर भी 0 हो जाएगी तो ये 1 आ जाएगा और h ही आएगा.
यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा, यहाँ पे फिर 2 की पावर 2 तो 4, और 2 की पावर 3 है तो 8, और इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 गिव्स द इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या क्या बन जाएगी, 2s 2h 4h minus 1, 2 4s are 8, 8h minus 2, or 16h minus 3, and then you at the end we will be having 2 raised to the power h, because 2 raised to the power plus 1 or 2 raised to the power minus 1 ये cancel हो गए, ठीक है। So you have this equation number 2. Subtract the two equations to get. अब हम इन दो equations को, equation 1 और 2 को अगर subtract करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, s equals to minus h plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 and up to 2 raised to the power h minus 1 plus 2 raised to the power h. और हमारे पास अगर इनको हम समराइज करके जनरलाइज करके लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन, 2s equals to 2 raised to the power h plus 1 minus 1 minus h plus 1, which proves the theorem. So this is a theorem which is used for the build heap, and we are saying that this is a linear type time function. Because why this is a linear time function? Because we have to follow each step of the height. We have to follow each level of the tree. That's why we are saying that this is a linear time function, and the following theorem proves it as well. Since a complete binary tree has between 2 raised to the power h and 2 raised to the power h plus 1 nodes, so s को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power h plus 1 minus h plus 1. और देखें 2 raised to the power h plus 1 minus 1 क्या है, number of nodes, तो उसे हम कह सकते हैं capital N. So we can represent it as capital N minus log base 2. देखें आपने इसका अगर log base 2 लें तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू वैसे ही n हो चुकी है, ठीक है। log base 2 of n plus 1 क्या आएगा आपके पास, clearly as n gets larger the log base 2 of n plus term becomes insignificant and s becomes a function of n. So s जो है, जो sum of heights की अगर हम बात करें तो वो टोटली डिपेंडेंट है नंबर ऑफ नोड्स पे, n पे, ठीक है। और जो इसकी सेकेंड टर्म है log base 2 of n plus 1, that is not significant. अगर नंबर ऑफ नोड्स 1 मिलियन हो, 10 मिलियन हो, 1000 हो, 100,000 हो, then as we grow, as we have much larger numbers of elements or nodes, then the second term, which is log base 2 of n plus 1, will be insignificant because it is having so less value, and that will, if that value is subtracted from the n, it will not having that much impact on the n. So that's why we can say that, we can conclude that sum of height is dependent upon n, number of nodes. जितनी number of nodes होंगी उनके accordingly हमारे पास sum of heights या tree की जो है वो complete binary tree की heights बनेगी, ठीक है। So build heap in linear time, this is a linear time function because this is dependent upon the sum of the heights, and some of the heights are depending upon the number of nodes, that is capital N. Now there is another way to prove the same theorem. अब देखें इसी थ्योरम को हम दोबारा अगेन एक और मेथड से प्रूव करने की कोशिश करते हैं, so that you have more understanding of this theorem. The height of a node in the tree. देखें एक ट्री के अंदर नोड्स की हाइट क्या होती है, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट डाउनवर्ड पाथ टू अ लीफ। ऐसा ही है, ट्री की मैक्सिमम हाइट क्या होती है,
ट्री का सबसे डीपर जो लीफ नोड होता है, ठीक है, वहां तक जो भी नंबर ऑफ एजेस हैं और जो लॉन्गेस्ट पाथ है up to the leaf node, that is the height of the node in the tree. Now next point is the height of a tree is equal to the height of its root. The height of the tree is equal to the height of its root. रूट नोड की जो भी हाइट होगी वो ही ट्री की हाइट भी होगी. फॉर एनी नोड इन द ट्री दैट हैज सम हाइट h, darken h tree edges, go down tree by traversing left edge, then only right edges. There are n-1 tree edges and h edges on right path. So number of darkened edges is n-1 minus h, which proves the theorem. So अब देखें, अब आप now you cannot understand these lines. So let's have an example and we will one by one analyze the the theorem, the statements of the theorem. Let's suppose this is a complete binary tree, perfect binary tree. You can see this is a perfect binary tree. ठीक है जी, ऐसे ही है. पहला स्टेप क्या है? Make the left edges for height 1 nodes. देखें, leaf nodes, ये all these are leaf nodes. ठीक है, इनके जो लेफ्ट एजेस हैं, ये लेफ्ट एजेस हैं, ठीक है, इनको हमने डार्क किया, येलो कलर से मैंने डार्क किया. ठीक है, ऐसे ही है, ये हाइट 1 पे है, ऐसे ही है, इनकी हाइट भी क्या है, 1 है. इनको मैंने हाईलाइट किया, इनको मैंने मार्क किया. देन marking the first left edge and the subsequent right edge for height 2 nodes. अब देखें, ये हाइट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हाइट 1 है. अब हम हाइट 2 पे आए तो हाइट 2 का हमने लेफ्ट नोड मार्क किया एंड देन वी विल इट्स मार्क द सब्सिक्वेंट राइट नोड, लेफ्ट एंड राइट, ऐसे ही है. Then marking the first left edge and the subsequent 2 right edges for the height 3 nodes. अब देखें, अब हम पहले हाइट 1 पे थे, फिर हाइट लीफ नोड के बाद ये हाइट 1 है, ये हाइट 2 है, और अब हम हाइट 3 पे आ चुके हैं. तो हाइट 3 पे आपने क्या करना है? At height 3 mark the first left edge, this is the first left edge and the subsequent 2 right edges. ये देखें, subsequent 2 right edges, इनको आपने मार्क किया. then आपने क्या किया? अब आप देखें, marking the first left edge and the subsequent 3 right edges for height 4 nodes. देखें, पहले आप कहां पे गए? हाइट 3 पे. 1 2 3, ठीक है. आपने 3 पे क्या किया? मार्क द फर्स्ट लेफ्ट एज एंड द सब्सिक्वेंट 2 राइट एजेस. देन अब आपने राइट मूव करना है हाइट 4 पे, ठीक है, दैट इज रूट नोड. और जैसे ही आपने हाइट 4 पे मूव किया तो यहाँ पे आपने मार्क द फर्स्ट लेफ्ट एज एंड द सब्सिक्वेंट 3 right edges, this one and this one, यहां से, ठीक है, this one. अब इनको अगर आप काउंट करें तो ये आपके पास क्या है? ये नोड्स क्या हैं आपके पास? हाइट 4, दैट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस ट्री, दिस परफेक्ट बाइनरी ट्री. इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है? 4. तो इसके आपने सब्सिक्वेंट नोड्स को मार्क किया और यही इसकी हाइट है, यही इस ट्री की हाइट है. एक्चुअली दिस इज दी, जो रूट नोड की हाइट होती है वो एक्चुअली ट्री की भी हाइट होती है, और ये लेवल कहाँ पे है? 4 पे, ठीक है. हाइट ऑफ द नोड इज 4. अब इन एजेस को आप गिने 1 2 3 and 4. So this gives you the height of the tree, or which is the height of the root as well, root node as well. Now देखें, ये वो नोड्स हैं
जिनको हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है। ऑल दीज आर दी मार्क्ड नोड्स, ठीक है। अब इसी ट्री को आगे मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो देखें इसका ये जो राइट सब ट्री है ये अनमार्क्ड है, ऐसे ही है 1 2 3 4, ये अनमार्क्ड है। सो अब देखें इस डायग्राम में मार्क्ड एजेस दे आर शोन बाय द येलो कलर एंड द अनमार्क्ड एजेस दे आर शोन बाय the unmarked edges are shown by the dotted line, ठीक है। सो अगर आप नोड्स गिने, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and 31। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं इस बाइनरी ट्री में 31। ट्री एजेस कितने हैं, ट्री एजेस कितने हैं इनको काउंट करें, ये एजेस हैं, ये जो कनेक्शन है बिटवीन द टू नोड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्री एजेस कितने हैं 30। ट्री की हाइट क्या है आपके पास 4, ठीक है। आप कहीं से भी डीपेस्ट एज को गिन लें, यहां से गिन लें या यहां से गिन लें 1 2 3 4, 4 इज द हाइट ऑफ। डॉटेड एजेस कितने हैं आपके पास, वो भी 4 हैं डॉटेड एज, दीज आर द डॉटेड एजेस 1 2 3 4, दे आर 4 एज वेल। डार्कन्ड एजेस कितने हैं, तो डार्कन्ड एजेस आपके पास कैसे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्री एजेस हैं 30, उसमें से डॉटेड एजेस हैं 4, तो 30 माइनस 4 करें तो आपके पास डार्कन्ड एजेस आ जाएंगे, दैट इज 26। या आप इन डार्कन्ड एजेस को काउंट कर लें, देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26। so the darkened edges or the yellow colored edges are 26। और ये आप 26 कैसे गेट कर सकते हैं, you can get this by the same formula which you have proved just right now, और जो कि again prove हो रहा है, capital N minus H minus 1। so total number of nodes कितने हैं 31, डॉटेड एजेस कितने हैं आपके पास 4, सॉरी हाइट ऑफ द ट्री क्या है 4 है, 31 माइनस 4, या डॉटेड एजेस भी 4 हैं जिन्हें आप एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 31 माइनस 4 माइनस 1 बाय द फॉर्मूला, so you will get 26। so hence this theorem is proved again by this method as well। any question related to this, and what was the theorem? There are n minus 1 tree edges। देखें ट्री एजेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने थे हमारे पास 30 31, तो ट्री एजेस कितने आए 30, n माइनस 1 हुआ ना, ठीक है, वी हैव प्रूव दैट। और अगेन हमने ये प्रूव किया h एजेस ऑन द राइट पाथ, और जो राइट पाथ है ठीक है वहां पे हमारे पास कितने एजेस हैं, ये वाला जो राइट पाथ है इस पे हमारे पास 4 एजेस हैं जो कि हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ डार्कन्ड एजेस इज, डार्कन्ड एजेस हमारे पास कितने हैं n minus 1 minus h, that is 26, which proves the theorem। so how we have proved this theorem, the height of a node in the tree is equal to the number of edges on the longest downward path of a leaf, this is height। the second point was the height of a tree, the height of its root is the height of the tree। for any node in the tree that has some height h, darken h tree edges,
go down tree by traversing left edge, then only right edges. So we have followed all this and we have achieved the following proof. So we have proved the theorem by the second method as well, that if we have number of nodes is equal to 31, then the tree edges will be 30 and the height will be 4 and the darkened edges will be n minus h minus 1. So if you have number of nodes n, then the tree edges will be n minus 1 and the height will be equal to the dotted edges, the total number of dotted edges up to the leaf node, and the darkened edges will be n minus h minus 1. And the dotted edges will also be equal to the height h. So this has proved the theorem again. So any question? Any question related to today's lecture and today's topic, this theorem as well? If you have any question, you can ask about the heap. जी वो सर अभी पढ़ेंगे तो फिर समझ आएगी भी थोड़ी अच्छा, समझ आ अभी गई कुछ समझ नहीं आया। चलें इसको नहीं सर। पढ़ें, देखें और क्वेश्चन पूछें इसमें से। नेक्स्ट लेक्चर में भले आप पूछें, ठीक है। तो आपके जो विंटर वेकेशन के जो दिन हैं उनमें लेक्चर्स नहीं होंगे, ठीक है। ओके सर। अब तक की जो डायरेक्शंस हैं फ्रॉम द अथॉरिटी वो यही है कि विंटर वेकेशंस में आपके ऑनलाइन लेक्चर्स भी नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी डायरेक्शन हुई तो आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम और अपने सीआरस और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कीप इन टच रहिएगा, ठीक है। जी ठीक है सर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। और हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे हमने लेक्चर 32 स्लाइड्स तक आई थिंक हमने कवर कर ली हैं, दैट इज। और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नई एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट इज अ न्यू एडीटी, दैट इज टेबल एंड डिक्शनरीज, ठीक है। इसको हम फॉलो करेंगे। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ योर कोर्स। ये लेक्चर 14 की स्लाइड्स हैं और ये तकरीबन कोई आपके पास 9 स्लाइड्स इसमें रहती हैं। उसके बाद आपके पास लेक्चर नंबर 15 होगा और लेक्चर नंबर 16, ठीक है। सो वी हैव ओनली 2 lectures left for this course, and if we have time we will one of the lecture we will keep for the revision as well, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। जी ठीक है सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपकी छुट्टियां ना हुई तो आपके क्विज कितने हो चुके हैं इस वक्त? अब तक आपके 2 क्विज हो चुके हैं या 3 हो सर चुके हैं? दो हो 2 चुके हैं सर। क्विज हो चुके हैं और 3 असाइनमेंट्स हो चुकी हैं, ऐसा ही है? जी सर। चलें, आपके फिर 2 क्विज और 1 असाइनमेंट रहती है जिन्हें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, चाहे विंटर वेकेशन के दौरान हो या उसके बाद हो, आपका क्विज होगा, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और अगर उस दौरान आपका मिड आता है तो उसमें फिर आपका क्विज नहीं होगा, उससे फिर नेक्स्ट होगा, ठीक है, जब भी क्लास होगी। सिलेबस इज योर लेक्चर नंबर, कहाँ तक हमने क्विज कवर किए हैं, कितने लेक्चर्स कवर कर लिए? तक हो गए थे सर। 6 लेक्चर्स कवर कर लिए। तो 6 से 7, 8, 9, 10, ठीक है। 7, 8, 9, 10 इनमें से आपका 7 से 10 तक
ये 4 लेक्चर्स बनते हैं, 7, 8, 9, 10, इनमें से आपका क्विज होगा जो भी टॉपिक्स हमने इसमें पढ़े हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। Allah Officer.